नमः शिवाय च शिवतराय च। उस सुख पूर्वक परमात्मा को हमारा नमन है। संसार के उत्तम सुखों को देने वाले परमात्मा को हमारा नमन है। उस कल्याणकारी को हमारा नमन है। अपने भक्तों को सुख देने वाले उस प्रभु को हमारा नमन है। उस मंगलकारी परमेश्वर को हमारा नमन है। धार्मिक जनों को मोक्ष देने वाले उस परमात्मा को हमारा नमन है। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर मीनाक्षी मैम। धन्यवाद योगेश जी for that quick and lovely prayer this morning. So let's start off with obesity. So जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, obesity is one of the other pandemics that we are battling with. हमारे देश में obesity के जो पेशेंट्स हैं ये काफी हद तक अब बढ़ गए हैं. WHO had declared long before that COVID आने के पहले ही हम एक पैंडेमिक से जूझ रहे थे, and that was obesity. So pandemic does not necessarily मतलब वो फैलने वाली बीमारी जरूरी नहीं है कि पैंडेमिक उसी से करेगी. ये एक बीमारी है जो काफी लोगों को अभी हो रही है. लॉट ऑफ कॉजेस, बट ऑल ऑफ द कॉजेस बेसिकली कम डाउन टू योर लाइफस्टाइल, एंड इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिजीज है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओबेसिटी हमने कल ये डिस्कस किया. सो आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस, बट यस, टू थिंग्स आर देयर. एक तो खाना सही से नहीं खाना और दूसरा मूवमेंट आपका एडिक्वेट नहीं होना. सो टू थिंग्स आर द primary things that will cause this obesity, and that is eating too much and moving too little. So इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. So there is lot of other हम आपकी कुछ बहुत सारी आदतें हैं, खराब आदतें, जिनको हम इसके बारे में हम इसमें जोड़ सकते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. आई ऑलरेडी डिस्कस इट यस्टरडे. सो कल ये मैं बात नहीं कर पाई थी. What are the types of obesity? So आप अगर इस पिक्चर को देखें तो this skinny model is underweight. ये इसका जो BMI है वो 18.5 से कम होएगा. BMI होता क्या है? आपका वेट और हाइट को ये एक कैलकुलेशन करके हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, एंड वेट पर हाइट हम इसमें देखते हैं. सो अगर वेट पर हाइट अगर आपकी बहुत कम है तो दैट वुड बी 18.5 और लेस, तो आप अंडर वेट होंगे. योर नॉर्मल BMI शुड बी 18.5 to 24.5. इन इंडिया इट्स 25 तक ये इसको हम नॉर्मल मानते हैं. एंड अगर 25 से ऊपर है लेकिन 30 से कम है तो देन यू आर ओवरवेट, लेकिन इसको हम फिर भी ओबेसिटी नहीं बोलेंगे. बट इफ यू आर अबव 30 दैट यू फॉल इन द ओबीस कैटेगरी. अगर 35 से भी ऊपर है तो आपका दिस विल बी एन एक्सट्रीम केस, and you are susceptible to lot of diseases, and you are susceptible to severity in a lot of diseases as well. तो अगर आपको जुकाम या ऐसे कोई इन्फेक्शन भी हुआ तो आशंका है, यही है, संभावना यही है कि आपको जो बीमारी है वो थोड़ी गंभीर होगी. So when you are extremely obese, you are opening the door to lot of other things. कैसे पता चलेगा कि आप if you're fat or not? If your BMI is above 30, 30 is that number that you need to remember. अगर 30 के ऊपर है तो you are obese, and अगर 35 के ऊपर है you are morbidly obese, and 40 के ऊपर है तो this is something that needs to be taken care of immediately. So क्या what are the things that you need to stop doing? कुछ bad habits आपकी ऐसी होती हैं that cause obesity. Number one is not making time for physical activity. Physical activity अपने शरीर के लिए 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट निकालना is not that big a deal, and this is something that you need to work on. It's less than
less than 30 minutes also if you spend on physical activity, this will help you help you a great deal. इसके अलावा mindless eating in front of the TV after dinner. So again, आपकी जो meals हैं, whether you eat 3 meals a day or whether you eat 5 meals a day or whether you eat something every 2 hours, it does not matter. आप जो भी consistently कर सकते हैं, that's good enough. But mindless eating, आपने खाना खा लिया, you are not hungry anymore, but just for the sake of munching, you are just sitting in front of the TV and eating something, that is not good. So इस इन सब आदतों को कर्ब करने की कोशिश करिए. ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल और स्वीटन ड्रिंक्स, सो जहाँ शुगर हम अपने ड्रिंक्स में मिलाते हैं, या फिर ड्रिंक्स कोई भी, वेदर इट इज कोक और वेदर इट इज एनी अदर सोडा दैट यू आर हैविंग, अगर स्वीटन ड्रिंक है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू अवॉइड दैट. सर ने बोला था 80 कैलोरी से ज्यादा कोई भी बेवरेज में नहीं होना चाहिए. इस चीज का खास ध्यान रखें. फॉर्मूला ऑफ 80 को रिमेम्बर करें and try to avoid this. Skipping your breakfast is another. This is also another bad habit. So this is one thing that I would say that be young. They finish off their kids' meals and apparently this is also a very bad habit and you should try to avoid it because हम हमेशा बच्चों का खाना जो है we make it, और उसमें हम कैलोरीज जो है वो हम बढ़ाते हैं, फैट कंटेंट बढ़ाते हैं, राइटली सो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. फैट एंड प्रोटीन एंड कार्ब्स इनको हमें अच्छी मात्रा में देना चाहिए. एंड देन फिनिशिंग ऑफ दोज मील्स एंड देन ईटिंग योर ओन मील, आपकी जो कैलोरी इनटेक है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. सेकेंड हेल्पिंग्स हमें लेना अवॉइड करना चाहिए. वी शुड टेक स्मॉलर हेल्पिंग्स and not reach out for second helpings as much as we can. And जो simple carbs हैं like sugar and white bread, इसको हमें avoid करना चाहिए. So these are just very basic things that you can just keep in mind. These are bad habits and इनको जब हम एक bad habit के जैसे perceive करते हैं या फिर इसको समझते हैं कि ये हमारी खराब आदत है, then इसको eliminate करना बहुत आसान हो जाता है. So another way to stop gaining weight is to add muscle. तो strength training जो है इसका ये important है, इसका महत्व है. वेट लॉस में कम से कम हफ्ते में 2 बार आपको कम से कम मिनिमम फॉर द सेक ऑफ फिटनेस यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्वाइस अ वीक, every week for the rest of your life. So strength training does not mean going to a gym and lifting a lot of weights. There are a lot of एक मेरा वीडियो है exercise, it's quite popular. So इसको आप देखें, उसमें मैंने आपको बताया है कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स. देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू टू जस्ट बिल्ड योर मसल. सो इसको मसल को मेटाबॉलिकली एक्टिव हमें रखना चाहिए एंड कोशिश यही करना चाहिए कि लॉस हमारा ना हो. So that is a good way to stop gaining weight as well. So strength training will help you a long way. So how does obesity affect your health? I think ये obesity वाले pandemic में हम सब गुजरे हैं and we all know this. I don't think there's any need for me to tell you. अगर आप वजन ज्यादा होएगा तो I think कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये बात पता है. ओबेसिटी होने से, वजन ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट डिजीज होगा, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ रह सकता है, आपकी जो जॉइंट की प्रॉब्लम्स हैं ये भी आपके वजन की वजह से होती है. आपको सांस नहीं आ पाएगी, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है इफ यू आर ओवरवेट और इफ यू आर ओबीज. एंड अगर आपको वजन ज्यादा होने की वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आपको गॉलस्टोन्स की बीमारी भी हो सकती है. इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ मेनी अदर डिजीजेस दैट विल हैपन इन योर बॉडी if you are obese. And I think that this is not something that we should spend too much time on. I'm going to move on. So कल मैंने बात की थी कुछ अजीबोगरीब कारण जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है. I will very very quickly skim through it. We don't have much time. So sleep, अगर आप अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो yes, you might be putting on weight. If you are too stressed in your life, this is going to release some stress hormones called cortisol, and cortisol से आपका वजन बढ़ेगा.
एंटी डिप्रेसेंट्स, अनफॉर्चुनेटली एंटी डिप्रेसेंट्स जो लेते हैं वो एक विशियस साइकिल में अटक जाते हैं जिसमें इनका वजन बढ़ता रहता है, इनको मूवमेंट करने की इच्छा नहीं होती, बॉडी इमेज, सेल्फ इमेज जो है वो इनकी घटते जाती है, एंड देन दे आर all the more less likely to move about, and this adds to their obesity. This also adds to some food disorders, food eating disorders, जिसमें ये खाना they do a lot of mindless eating. So and you know antidepressants जो हम लेते हैं for those you know mood lifting, हम वो भी आपका वजन बढ़ाते हैं. So if you are on antidepressants and you are gaining a lot of weight, please speak to your doctor and see if this can be changed. Steroids, अगर कोई कारण से आप steroids ले रहे हैं लंबे समय तक, your weight will increase because of that. And that you know you need to be conscious. अगर of course अगर आप steroids दे रहे हैं तो डॉक्टर के पास कोई valid reason होगा देने के लिए. So that may not be stopped, but yes, you might fluid retention की वजह से अगर हो रहा है, you can take care of that. थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, खाने का ध्यान रखेंगे if you are on steroids. So hypothyroidism is another cause. TSH जब levels बढ़े हुए होते हैं, मोटापा इसके साथ साथ आता है, so you need to treat your hypothyroidism. आपको अपना thyroid levels को normal रखने पड़ेंगे, and you need to be working out and eating good food. So polycystic ovarian syndrome is another condition जिसमें आपका रेजिस्टेंस टू इंसुलिन बढ़ता है, वजन बढ़ता है, शुगर कंट्रोल नहीं होती. सो अनदर रीजन दैट आई एम टू टॉक अबाउट इज क्विटिंग स्मोकिंग. अनफॉर्चुनेटली you know I've said a lot of times that smoking does no good to your body. You should stop. अगर आप स्मोकर अगर आप छोड़ नहीं सकते तो कम से कम आज एक सिगरेट कम पीजिए, बिकॉज इट डज एब्सोल्युटली नो गुड टू योर बॉडी. बहुत सारे टॉक्सिन्स आप अपने शरीर में डाल रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली जब आप स्मोकिंग को क्विट करेंगे, टेम्परेरीली यू विल बी गेनिंग वेट, एंड दैट्स समथिंग you need to be aware of. ये टेम्परेरी होता है, and it's easy to lose this weight as well. So stop taking any medications. अगर कोई भी दवा की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, दवाइयां लेना बंद ना करें, डॉक्टर से बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड. सो अगर आप कोई भी दवाई की वजह से वजन बढ़ रहा है एंड यू आर अवेयर कि इस दवाई से वजन बढ़ता है, then you need to take care of your diet, you need to take care of your movement, you need to take care of your habits, and you need to take care of, you need to make a conscious decision कि मुझे थोड़ा सा अपनी movement बढ़ानी है. By just increasing your movement, by going and taking your own glass of water, by just getting up, and maybe you know अगर आपका घर आप you know आप गाड़ी में जाते हैं या बाइक में जाते हैं, you can just park. This is going to help you. Taking the stairs versus taking the elevator, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं to stop gaining weight. So दूसरी चीज है जो अगर किसी और कोई और ऐसा है जो आपकी, सपोज दैट इज समवन हु जस्ट टेकन सम कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वो एंटीबायोटिक्स से उनका वजन बढ़ा है, देन यू डोंट avoid that drug, because everyone has a different experience with the same drug. So sometimes your weight gain might just be because of water retention. आपके शरीर में पानी जो है, पानी बढ़ जाता है. So ये परमानेंट वेट नहीं है, ये फैट नहीं है, ये सिर्फ वाटर है जो आपके शरीर में अच्छे से नहीं निकल पा रहा for some reason. So you can find out why is there water retention. You can control the puffiness from fluid retention, and stick to a lower sodium diet in the meantime. So बहुत ज़्यादा नमक खाने से भी fluid retention हो सकता है. So you can just try to avoid that. If you do gain weight, check with your doctor about another drug that you can take because of the medicines. And ये दवाइयाँ की वजह से जो वजन बढ़ता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. And अगर मेटाबॉलिज्म कम होने के वजन बढ़ रहा है, then all you need to do is you need to just take care कि आप
You need to just take care कि आपको अपनी movement जो है बढ़ानी है. This is really important. So moving on, कौन सा डॉक्टर obesity को treat करता है? So usually a general practitioner will guide you about obesity. But you know, there are of course bariatric surgeons जो surgeries करते हैं, and they will be able to guide you better if you're morbidly obese. So एक low calorie diet help in losing weight. It's a very simple mathematics formula. जितना आप खर्च कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा आप खा रहे हैं तो वो स्टोर होगा. अगर आपके पास में 100 रुपीज हैं एंड इफ यू आर स्पेंडिंग जस्ट ओनली 20 रुपीज, देन यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट ओवर विद दैट 80, एंड वो 80 आपको स्टोर करना पड़ेगा. सिमिलरली विद फूड, so storing money is a good thing, but storing calories in your body is not a good thing, because इससे आपका वजन जो है ये definitely in the long run you will be heading towards obesity. So आपको अपनी जो calories हैं, सर कहते थे अगर you know, if you want to eat like a lion, you need to live like a lion. You need to, आपको जितना वो दौड़ता है अपने खाने की प्लेट के लिए, एक खाना के टाइम के लिए वो जितना दौड़ता है, जितना भागता है, उतना अगर आप कर सकते हैं, then you can afford to eat that. So yes, if you do work out, if you do walk a lot, you know, do your morning walks, then you can afford to eat some high calorie foods. But अगर high calorie food आपको खाना है, अगर आपको खाना है, you're not sort of expending it, अगर आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं अपनी कैलोरीज, then that is not valid and आपको ये नहीं करना चाहिए. So जितना आप जितना खाते हैं उतना खर्च करना है, और उससे एक कैलोरी डिफिशिएंट डाइट से ही आपका वेट लॉस is going to be successful. So does maternal obesity pose a risk to the mother or child? Yes. So maternal obesity. So we're talking about pregnant ladies, and pregnant ladies में अगर वजन ज़्यादा है तो या फिर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, so this can cause a lot of problems to the mother and the child. Childhood obesity इनको हो सकती है, बच्चे को hypoglycemia. Sometimes that can also happen. There are a lot of other issues that can happen with the pregnancy. I'll not get into it right now, but yes, maternal obesity is a big problem in today's time. So how do you prevent childhood obesity? So देखिए, ये fish common these days. So a lot of children are becoming obese, and this is not a good thing for our society and for our future and for their future. So what happens? There would be a healthy child. This healthy child is exposed to a lot of video games, a lot of high fat foods, and या फिर अगर video games नहीं खेल रहा है तो ये बच्चा खाली दिन भर पढ़ाई में है, कोई movement नहीं है. So all work and no play makes Jack a dull, इसको इनका वजन जो है this can increase. So mildly obese, इसमें से यहाँ पे mildly obese, तो इनको काम करने में तकलीफ होती है, and they will not want to take the stairs, they don't want to, they become lethargic, and then ये धीरे धीरे इनका वजन बढ़ते जाता है, and this eventually ends up in a very severely obese child. So this should not happen. छोटी उम्र में ही एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, रनिंग, प्लेइंग, ये सब इनकरेज करें. ये सारे बच्चे जो आज की डेट में, दे आर ऑल, you need to explain to them this is what I would recommend to you. Then इनको हमें क्या क्या हमें एडवाइस देनी है? 5 या उससे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनके प्लेट, 5 or more fruits and vegetables every single day without fail. 2 hours or less of recreational screen time. जो इनका screen time है, इसको हमें 2 घंटे से कम हमें कोई भी screen time हमें नहीं देना चाहिए. No movie, no video game, no phones. So you need to tell them, जो बड़े बच्चे हैं उनको भी screen जो है, it should be less than 2 hours. Physical activity 1 घंटे रोज. So anything, whether it is cycling, whether it is skipping, whether it is running, whether it is jogging, whether it is just going to the park and just playing around in the park,
वॉकिंग अराउंड इन द पार्क, थोड़ा भाग लिया, थोड़ा कर लिया, 1 घंटा एवरी सिंगल डे, इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. I understand that there's a lot of pressure from the studies as well, but ये 1 घंटे जो हैं, I understand that this is what is a lifestyle disease. अगर आप इसको अपनी lifestyle को शुरू से ही, बचपन से ही इनमें आप instill नहीं करेंगे importance physical activity की, they will not go ahead and be healthy individuals, and उनकी health भी आपके लिए important होनी चाहिए. So sugary drinks जो हैं, this should be zero. What are the complications? I'll not get into it. It's very common. So what are the risk factors? तो some comorbidities या फिर genetic problems या फिर metabolism अगर है, अगर slow है, then this is a biological reason जिसको आप most of the times you cannot fix this. If the child is very stressed or if the child is very depressed या फिर बहुत सारे mood disturbances हैं, again that child will not be able to the child might land up with pediatric obesity. ईटिंग बिहेवियर्स अगर सही नहीं है, एक्टिविटी हैबिट्स आपने सही नहीं करी, these will also cause problems. Socioeconomic status, food policies, neighborhood schools, so these are all social things that that your schools can do, your neighborhoods can do. पार्क अगर है तो उसको मेंटेन रखें, बच्चे के जाने लायक बनाएं. Psychosocial, so of course a few things. इससे ऊपर है तो आप morbidly obese हैं, so to see it as well. अगर आपका जो वजन है 100 पाउंड या 50 किलो ज्यादा है फ्रॉम द नॉर्मल, जो आपका बीएमआई है, नॉर्मल आइडियल वेट से 50 किलो से तक ज्यादा है, then you are morbidly obese. या फिर आपका बीएमआई 40 से ज्यादा है या फिर 35 से ज्यादा है एंड कोई obesity related health condition आपको है, which 101% if you have BMI of 35, there will be something or the other. या तो आप प्री डायबिटिक होंगे या प्री हाइपरटेंशन आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा. those things can definitely happen. सो abdominal obesity क्या है? सर कहते थे जो पेट की चौड़ाई है इसको अभी 80 सेंटीमीटर से कम हमें रखना चाहिए. सो अब जब हमारी पेट की चौड़ाई बढ़ती है, this causes increase in the visceral fat, and this is not healthy at all, and this is the most dangerous kinds of obesity. So this is the आपके पेट की चौड़ाई. लाइपोसक्शन के बारे में कुछ सवाल आए थे, एंड लाइपोसक्शन इज अनदर नेम इज बॉडी कॉन्टोरिंग. सो इसमें आपका and it is but there is what I want you to know about bariatric surgery is that इसमें सबसे पहले patient की willingness देखी जाती है. is the patient wanting to lose weight? अगर आपको वेट लूज करना है, दे ऑल्सो सजेस्ट यू ऑलवेज दैट आप अपने वजन घटाने की भी कोशिश करें, क्योंकि एनी ऑफ दीज सर्जरीज दैट यू माइट गेट डन, वेदर इट इज गैस्ट्रिक स्टेपलिंग और वेदर इट इज लाइपोसक्शन, अगर आप if you are not willing to work towards your physical activity, towards eating less, towards eating right, then this problem will recur again, and especially your जो बड़ी bariatric surgeries है, they will not work. So your willingness and your want to decrease fat is going to be one of the most important factors that you need to take. You need to that would decide whether or not you are a candidate for surgery or not. लाइपोसक्शन बहुत क्लियरली यहाँ लिखा है, एंड wherever you go, लाइपोसक्शन के बारे में जब आप पढ़ेंगे, you will see that this is not a substitute for diet or physical activity, and this is not a treatment for obesity. दूसरी बात, लाइपोसक्शन कराने के पहले आप ध्यान रखें, अगर कोई कार्डियोवास्कुलर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो then you please speak to your physician as well before getting this done. So am I a candidate? I think we discussed this. Medications अगर हम discuss करें, there is a medication called Orlistat. This reduces your this sort of makes your fat pass in the stool, but because this it causes a lot of GI problems as well. आपको this is थोड़ा incontinence की problem भी आपको आ सकती है. Always take this in the
take a doctor in the loop before taking this medicine. So that's all that I had for you today. I hope that this was helpful and it can bring about some change in you if you are obese. um, uh, that's all from us today. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another show. Until then, goodbye.